जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आवाज़ आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? जी वालेकुम सलाम। कार साहब आ रही है, गो अहेड। अच्छा जी, आई होप इट इज़ क्लियर एज वेल, राइट? सर बिल्कुल ठीक है, शुरू करते हैं। थोड़ा सा और वेट कर ले क्योंकि अभी बहुत कम पार्टिसिपेट्स आए। जी जी जी, जी हाँ, लेट अस 2-3 मिनट एवरीवन 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं मेरे ख्याल में जी। जी, बहुत अच्छा। हाँ वेट कर ले तो डॉक्टर साहब मुझे याद पड़ रहा है कि हमारे SWL मेंबर में से किसी एक के पास हैक RF1 भी है। अच्छा, हाँ, सो दैट्स गुड। और मुझे याद नहीं आ रहा कि किन्होंने जिक्र किया था। हम यहाँ पे भी पूछ सकते हैं या ग्रुप में पूछ लें मेरे ख्याल में। हाँ, इस तरह कर लेंगे जी। यू कैन सी माई स्क्रीन नाउ। जी बिल्कुल। मैं इसको, अब फुल स्क्रीन हो गया है शायद। जी बिल्कुल। ओके फाइन। It's 10 participants right now, mashallah. ये इरफान साहब अलग हैं और मिस्टर ड्रोन अलग हैं। नहीं नहीं सर, वो मिस्टर ड्रोन मेरा ही निकनेम है। वो असद साहब बेहतर जानते हैं इस बारे में। अच्छा, नहीं तो मैं समझा इरफान अहमद वो आप हैं, लेकिन नहीं जी, ये मैं डिफरेंट यूजर से। ओके इरफान भाई, ओके ओके फाइन। वाओ, डॉक्टर मुबशिर इज आल्सो हियर, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैंने कहा पढ़ाई कर लूं। ठीक है जी। नाइस टू सी यू, नाइस टू सी यू। Musawwir Saab is here. Zishan Akbar, he just asked, he's here as well. Abdur Rauf Saab, mashallah. All of you are welcome, ji. Let us wait for a minute and two, and then we will start, inshallah. Or we will wait for Asad Bhai. वो जैसे कहते हैं तो we'll go on. अच्छा जी, टॉक के दौरान अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ रेजिंग योर हैंड माइट बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी, कि मुझे पता चले। आप लोग उसी वक्त इंस्टेंटली मुझे कह सकते हैं, रोक सकते हैं, इंशाल्लाह, नो प्रॉब्लम। मेरे ख्याल में हम स्टार्ट कर लेते हैं, असद भाई। जी जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करें सर, बिस्मिल्लाह करें। Okay, Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all on behalf of Pakistan Amateur Radio Society. This is Dr. Waqar talking to you people. I'm serving Abbasine University as assistant professor, and I really like to be with you people, delivering something from my knowledge, and I will also learn from you people as well. This is going to be an interactive session. तो ये पहले भी हम कुछ कर चुके थे थोड़ा बहुत, उसमें कुछ एडिशन भी की है। तो आज हम विल बी डिस्कसिंग बेसिक्स ऑफ एंटेना,
how antenna works and what kind of antennas do we have. So let's start ji, Bismillah Rahman Rahim. So the outline of the presentation is that we'll talk about EM spectrum. EM spectrum kya hai, HF, where HF stands, and what is HF, what is VHF, what is UHF, and what are the frequency ranges of it. तो उसके बाद हम एंटेना बेसिक्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे बेसिक एंटेना जो है दैट इज डाइपोल एंटेना, उसका कॉन्सेप्ट हम देखेंगे. विल टॉक अबाउट रेडिएशन पैटर्न that defines the coverage area of the antenna, and there are different types of radiation patterns depending on the type of antenna. We'll discuss them as well. Then we will one by one talk about HF, VHF and UHF antennas, different types of them. Or I have added these two items. I have some more items as well, but that's not in the outline. लेकिन polarized antennas कौन से हैं और polarized antennas का क्या concept है और वो किस लिए use होते हैं और उनके examples क्या हैं, तो we'll talk about them. And one of the example is obviously helical antenna. So we'll talk about our recently designed and tested helical antenna as well. जैसे मैंने कहा कि आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द EM वेव एंड फ्रीक्वेंसी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हम सबको पता है कि लाइट इज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड likewise our antenna transmits electromagnetic wave which travels with the speed of light. लेकिन उसमें हमने ये समझना होगा बेसिक 4 प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करती है और वो ऑब्जेक्ट का जो साइज है उस वेव से बड़ा होगा, सो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक and it can be transmitted onto that medium. It can be diffracted, it can be scattered. तो ये 4 scattering, diffraction, reflection and refraction, these 4 things these 4 properties are there in electromagnetic wave. अब जब wavelength की हम बात करते हैं तो ये जो हमें wave नजर आ रही है इस वक्त, let me take where is this pointer? Where can I take the pointer? Just a second. Annotate leke. So no, I don't want to take this one. Just a second. G, where is my pointer? I guess it is somewhere here. Sorry, I couldn't find it. But anyways, my cursor is visible, right? ये visible है आपको cursor? जी जी बिल्कुल विजिबल है जी. ये एक वेव का पैटर्न है जो हमें नजर आ रहा है, एक टाइम के एक्सिस से हमने इसके ऊपर इसको प्लॉट किया है. तो अब इसमें ये जो पीक आ रही है ना, जिस तरह ये पहाड़ से बना हुआ है, दिस इज एक्चुअली शोइंग अस द एम्पलीट्यूड which starts from 0 and it goes to its maximum, then it goes to 0 and then it goes negative and then again to 0 and then again this goes again and again. तो इसको ऑब्वियसली जिस तरह वेव को हम समझते हैं तो इसी तरह का पैटर्न होता है वेव का. अच्छा, इस वेव में जो पीक्स आ रही हैं तो these peaks are called crest and the dips are called trough. So crest and trough are actually maximas and minimas of the wave. तो दो मैक्सिमास के दरमियान जितना डिस्टेंस है या दो मिनिमा के दरमियान जो जितना डिस्टेंस है, that is from 0 till 0 for example, तो इसको कहते हैं one wavelength, and this is also called one cycle of a wave. So the number of cycles passing per second in time is actually called the frequency of that particular wave. So it means that ये जो 3 रेड, ग्रीन एंड ब्लू नजर आ रहे हैं, इन सब में एम्पलीट्यूड तो सेम है, बट देयर इज अ डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी. इनफैक्ट फ्रीक्वेंसी इन सब की डिफरेंट है. हायर फ्रीक्वेंसी में ज्यादा साइकिल्स पर सेकंड होंगे, लोअर फ्रीक्वेंसी में कम साइकिल्स पर सेकंड जो है वो पास करेंगे इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम. और इसका रिलेशन है वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी के साथ
वो इनवर्स रिलेशन है जो हमें नजर आ रहा है इस फॉर्मूला के थ्रू. दिस अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला. एफएससी में हमारे इंटरमीडिएट एजुकेशन में हमने ये पढ़ा होगा. c, where c is the speed of light and it has a constant value, is equal to f lambda. F is actually showing us the frequency cycles per second and lambda is the wavelength that is in meters. जो हमें ये नजर आ रहा है one wavelength, that is denoted by lambda. Okay, now lambda is can be equated to c by f, where we can see जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, जो कि हमें यहाँ नजर आ रहा है. ठीक है, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी वेवलेंथ हमारी कम होगी. ये जो वेव नजर आ रही है, दिस इज अ 1 हर्ट्ज वेव एंड दिस इज double of that, which is 2 hertz wave. I hope this is clear, right? Okay, now let's talk about spectrum. Spectrum क्या है? हमारे एक टीचर हमें कहा करते थे, when I was doing my masters in UK, he used to define the spectrum in a very nice way. He used to say, spectrum is a valuable resource. Valuable resource है which can be used again and again. And आजकल हमें पता है कि सारी जो है वो लड़ाई जो उसमें चलती है बिडिंग के दौरान टेलीकॉम कंपनीज की, वो वेवलेंथ वो स्पेक्ट्रम के ऊपर ही होती है. सो आई मीन स्पेक्ट्रम इज एवरीवेयर. यू नीड टू हैव अ रिसीवर कि वो उस फ्रीक्वेंसी की वेव को रिसीव कर सके. सो द स्पेक्ट्रम इज एवरीवेयर. व्हाट डू आई मीन बाय दिस? जिस तरह हमने फ्रीक्वेंसी की बात की, अब हमें फ्रीक्वेंसी समझ आ गई है साइकिल्स पर सेकंड. साइकिल्स पर सेकंड्स को हम हर्ट्ज कहते हैं. एच जेड से हम इसको डिनोट करते हैं. So it is written here. If it says 10 hertz, it means 10 cycles per second. If it is 100 hertz, it means 100 cycles per second. So अब ये 0 से start होता है. It goes till terahertz, 1 terahertz. Above 100 gigahertz is the terahertz. So giga is obviously 10 to the power 9. Mega is 10 to the power 6. Kilo is 10 to the power 3. तो हम स्टार्ट करते हैं डीसी से, where DC is actually no frequency and that is 0 hertz and it goes up till 1 terahertz. इस सारे के सारे को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. और इस स्पेक्ट्रम में अब हुआ ये है कि मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए मुख्तलिफ जो है वो बैंड्स एलोकेट किए गए हैं. बैंड से क्या मुराद है? एक खास फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज से लेकर 100 हर्ट्ज, ये एक फ्रीक्वेंसी बैंड है, group of frequencies hai. So if you look into this spectrum, ये इसका एक zoom view दिखाया जा रहा है 10 किलोहर्ट्ज से लेकर 300 किलोहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक. And there lie the MF, HF, VHF, UHF, SHF and EHF. What are those? They are letter bands, I mean designated for this frequency group of frequency. और एक खास वो AM short wave amplitude modulation, FM frequency modulation, UHF television, radar bands, satellite, मुख्तलिफ कामों के लिए उनको मुख्तस भी किया गया है. So VLF is very low frequency, LF is low frequency, MF is medium frequency. So here amateur people they usually talk about this HF. So HF is high frequency and the range of this HF is somewhere in megahertz, which is starting from 1 megahertz, I would say, going till 10 megahertz. Maybe I'm a bit wrong. उनको ज़्यादा पता होगा बाकी members को. We will talk about this later on as well. VHF, very high frequency, ultra high frequency is UHF, and SHF is super high frequency, and EHF is extremely high frequency. So this is what the now here is this जिसमें हम ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं वो ये 3 फ्रीक्वेंसीज हैं जिसमें एमेच्योर्स अपने एंटेनास बनाते हैं और उन एंटेनास को टेस्ट करते हैं, उसके थ्रू ट्रांसमिशन करते हैं. दे आर नंबर 1 is HF. So fortunately the frequency range is given. Happy to see this. This is 3 to 30 megahertz.
एंड द वेवलेंथ, जिस तरह हमने ये कहा था ना कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन जो है वो इनवर्स है. सो इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, the wavelength is going to be decreasing. So for 3 megahertz, the wavelength is 100 meter, and for 30 megahertz, it is 10 meter. Okay, so depending on the wavelength, the band name is being allocated. तो हम कहते हैं जी 80 मीटर बैंड, 60 मीटर बैंड, 40 मीटर बैंड एंड 20 मीटर बैंड. ये जो बैंड बताए जा रहे होते हैं ना, इसमें ज्यादातर 40 एंड 20 पे जो है एमेच्योर usually they work in this area, and they are the most used meter bands. तो इनको मीटर 40 मीटर बैंड और 20 मीटर बैंड से भी याद किया जाता है. Likewise, VHF, it starts from 30, so it's like after 30 is you stop here, you designate this to be HF, and after that from 30 till 300 megahertz is actually the VHF. And this VHF obviously is actually from 10 to 1 meter wavelength. Wavelength हमारी छोटी से छोटी होती जा रही है जितनी frequency बढ़ रही है, क्योंकि ये inverse relation जिस तरह मैंने आपको बताया था. तो so we call them so we normally call them 6, 4 and 2 meter band. ये मशहूर बैंड्स हैं, इसमें हम एमेच्योर जो काम करते हैं. इसी तरह UHF is starting from 300 megahertz and going till 3 gigahertz. In other words, 3000 megahertz. 3000 megahertz is actually 3 gigahertz. So 3 gigahertz, yes. And it is with a wavelength of 1 till 0.1 meter, and we normally work in this 70. हम कहते हैं जी 70 meter band में हम communication कर रहे हैं. 33, 23, 13 centimeter. Sorry, it's not meters. It's not 70 meter. It's 70 centimeter, in fact. Now, so you see, the higher is the frequency, lower is the wavelength, and this is what the distribution is. You can further go for further reading on this link, which can give you more information about it. अच्छा, the size of antenna is also inverse. जिस तरह हमने बात की ना wavelength और frequency की, तो higher frequency lower wavelength दे रहा है, जिसकी वजह से high frequency के antennas जो होंगे ना वो small in size होंगे, क्योंकि उनका wavelength in meters is small. So in order to, so जितने भी antennas होते हैं, they are in order of wavelength, in fact. तो इस वजह से हमारे mobile phone, yes, इमरान साहब. Muhammad Imran साहब, if you have any question, please. Okay. Anyways, let's proceed. हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि if जिस तरह हम देखते हैं ना हमारे मोबाइल फोन्स हैं, so the mobile phones have antennas embedded inside the mobile handset circuitry. So why is this? Because the frequency the mobile phone is using is higher, so the antenna size is small, and you can embed that antenna within the circuitry of the casing of the mobile handset. तो इसलिए हम ये देखते हैं कि मोबाइल फोन के अंदर जो एंटेना है वो नजर भी नहीं आता, but the antenna is obviously there. Likewise, if we talk about lower frequencies, तो HF में, क्योंकि HF frequency जो है वो low frequency है, so the antenna size is going to be larger. VHF is like medium in all three of them. UHF is going to be smaller in comparison to the others as well. I hope this is clear as well. Let's move further. So these were the... Yes, sorry, मैं थोड़ा सा वापस, हाँ जी, बस इसमें मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि आपने ऑलरेडी बता भी दिया, लेकिन मैं जरा थोड़ा सा उसको ओपन करना चाहूँगा कि 40 और 20 आर द मोस्ट फेवरेट बैंड्स. आपने जिक्र भी किया इनका. इसी के ऊपर हमारे जितने भी एमेच्योर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं. 40 मीटर को दिन के टाइम पे यूज किया जाता है, 20 मीटर को रात को टाइम पे यूज किया जाता है जी. नीचे अगर आप VHF सेगमेंट में आते हैं तो 2 मीटर इज व्हाट आवर रिपीटर्स आर एक्चुअली. जो 144 से लेके 148 मेगाहर्ट्ज तक है वो 2 मीटर में आता है, इसलिए ये भी हाईलाइटेड है, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बैंड्स अराउंड द वर्ल्ड. और उसके नीचे अगर आप UHF पे आते हैं, व्हिच इज 70 सेंटीमीटर,
तो 70 सेंटीमीटर हमारे क्रॉस बैंड रिपीटर्स में लगा होता है जी। क्रॉस बैंड रिपीटर्स जो इस वक्त एक चार्ली गोल्फ में भी लगा हुआ है और स्वात में भी लगा हुआ है और आगे शुगरान में भी लगाना है, तो उसमें वो VHF को रिसीव करता है और U पे भेज देता है, या U को रिसीव करता है और V पे भेजता है। तो दैट UHF सेगमेंट इज 70 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल जी। चलिए जी डॉक्टर साहब प्लीज। ओके, थैंक यू असद भाई। इसी तरह बीच बीच में बताते जाइएगा इफ देयर इज समथिंग टू ऐड। थैंक यू। अच्छा जी, let's talk about the classification of antennas. Since we are going to talk about antennas, so antennas are of three types in broad sense. Wire antennas होते हैं हमारे पास, array antennas होते हैं और reflector antennas होते हैं। जितने भी वायर एंटेनाज हैं, जिस तरह नाम से जाहिर है कि वो वायर की शक्ल से बनते हैं और वायर की शक्ल के होते हैं और वायर को लेके उसकी डिफरेंट शेप्स बनाई जाती हैं। तो डाइपोल इज विद टू आर्म्स of wires, and loop is like a loop, and helix is like a helical shape of wound in a helical shape. अच्छा जी, MHO starts from, okay Asad bhai, thank you for answering the questions, that would help me. अच्छा जी, array antennas जो हैं वो कौन से हैं? when we have more than one antenna of a dipole, so then we can have, अगर मल्टीपल डाइपोल्स हैं उनको स्टैक किया जाता है, या लूप को स्टैक किया जाता है, या इसी तरह बाकी एंटेनास को स्टैक किया जाता है, तो दैट बिकम एन array can be of different configurations. Two famous of them are YAGI-UDA array, and which is a directional antenna, and log periodic array. So obviously we are not covering all of the antennas, but एक broad classification बताई जा रही है। Reflector antennas में एक corner reflector है, and parabolic dish, which is used as a reflector. So they are actually reflector antennas. Now let's talk about the basics of a dipole antenna. Dipole antenna is the basic antenna and the first antenna any SWL member should try for the as his own first antenna. और ये सबसे सिंपल है बनाना, बस इसका कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाए। अगर हम देखें, ये दो वायर्स दिखाई जा रही हैं और इन दोनों वायर्स को जब यहाँ जहाँ S लिखा हुआ है, ये S शो कर रहा है इनका आपस में डिस्टेंस। सो द थ्योरी बिहाइंड द एंटेना हाउ इट वर्क्स इज कि व्हेन वी अप्लाई अ सिग्नल ओवर हियर, जहाँ ये S लिखा हुआ है, यहाँ हम सिग्नल अप्लाई करते हैं, तो वो जो सिग्नल है, वो जो करंट फ्लो कर रहा होता है, that current produces some current distribution at each side of the conductor. जैसे ये distribution हमें नजर आ रही है, यहाँ पे current जो है वो maximum होगा और at the end it is minimum. And after lambda by 2, where lambda is actually the wavelength, half wavelength पे ये अपने आप को repeat करेगा। minima अगर end पे था तो इसी तरह minima lambda by 2 के बाद होगा। इसी तरह फिर वो lambda by 2 के बाद minima, and it repeats itself in this distribution. So the first half distribution is positive and the second is negative. Likewise इस side पे भी ऐसे ही positive negative हमें create हो रहा होता है। Now ये जो conductors हैं, इन conductors को इस जगह से अगर हम lambda by 2 तक हम इसको flare up करते हैं, तो ये पहले जो था वो दैट इज ओनली द ट्रांसमिशन लाइन, जो कोएक्सियल केबल हमारी होती है नॉर्मली, उसी को हमने फ्लेयर अप किया, खोला, और फ्लेयर अप करते हुए यू सी द डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक दिस नाउ, एंड इट अपीयर्स ऑन दिस एंड, एंड देन व्हेन यू मेक इट एट राइट एंगल इन स्टेप नंबर 3, तो इट अपीयर्स, द करंट डिस्ट्रीब्यूशन अपीयर्स लाइक दिस। ओके, नाउ दिस बिकम्स द लीनियर डाइपोल। एक ट्रांसमिशन लाइन है, साथ में वर्टिकल हमने कंडक्टर्स को जो है ना इरेक्ट कर लिया है, एंड द साइज ऑफ देम इज ऑब्वियसली lambda by 2. Now this is what we were discussing. ये ट्रांसमिशन लाइन है हमारी, और इसी तरह ये जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस तरह हम पहले देखा हमने, ये जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है और ये वायर की जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, दे कंबाइंस and they make a shape like this one, a shape like this one, because कि हमने इसको फ्लेयर अप कर दिया है। जब फ्लेयर अप कर दिया है तो ये एक साइड पे
एक वेव बनाते हुए जो है ना ये बाहर निकलता है. इट बिकम्स लाइक अ वेव इन दिस सेंस एंड देन अ वेव इन दिस सेंस. ये इसी तरह ही है जैसे आप जो है स्टिल वाटर के अंदर एक पत्थर फेंकते हैं, उससे एक सर्कुलर वेव जनरेट होती है और वो वेव एक और वेव को जनरेट करता है और वो थर्ड वेव को एंड फोर्थ वेव एंड इट गोज ऑन. सो दिस इज अ डाइपोल. ये जो ब्लैक नजर आ रहा है, ठीक है, और ये जो ब्लू लाइंस हैं ये वो वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है. जितना पीछे से पावर आएगी उतना ये प्रोड्यूस करता जाएगा. एंड इन एक्चुअल इट लुक्स लाइक दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द रेडिएशन पैटर्न, जो कि लोअर राइट कॉर्नर पे आप देख रहे हैं, जिसको डोनट शेप कहा जाता है, डोनट रेडिएशन पैटर्न कहा जाता है. इसको एक साइड से देखें, दिस बिकम्स एन 8 एंड व्हेन यू लुक फ्रॉम द टॉप इट इज लाइक अ सर्कुलर. तो 3D से हमें ये बहुत अच्छा नजर आ रहा है, जिसमें रेड कलर जो है ना ये मैक्सिमम दिखा रहा है, मैक्सिमा दिखा रहा है. सो एट इट्स एंड्स it is minimum and on the broad side it is maximum. And obviously the 3D radiation pattern simple अल्फाज में मैं ये कहूँगा is actually the coverage area of the antenna, or it shows the gain of the antenna in fact. तो हम इसको सिमुलेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, हम इसको बना भी सकते हैं. अब हम आपको दिखा ये रहे हैं कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, 838 मेगाहर्ट्ज है, 900 है, 1095 मेगाहर्ट्ज है. जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे रेडिएशन पैटर्न चेंज हो रहा है. तो इट्स नॉट कंसिस्टेंट कि आपके एक एंटेना है लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर आप उसकी डिफरेंट रखें तो उसका रेडिएशन पैटर्न चेंज होगा, उसका गेन भी चेंज होगा. यहाँ एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन है ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए, और रेडिएशन पैटर्न जो 3D में हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड 3D में जो है हमें नजर आता है एक डाइपोल का, वो हम समझने की कोशिश करेंगे. इस वीडियो को देखने से समझ में आएगा. करंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेडिएशन पैटर्न ऑफ डिफरेंट डाइपोल लेंथ्स. जैसे मैंने कहा था ना कि ये जो लेंथ है, मैं वापस आता हूं यहाँ पे, ये जो हमने फ्लेयर अप किया था इसकी जो लेंथ है वो अगर L/2 L की जगह मैं लैम्डा रखूं and then I say half lambda and then I say 1 lambda and then 1.5 lambda and 2 lambda and 3 lambda, I can go on like that. We have only 10 minutes right now. Oh, अच्छा, शायद मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी तो 10 मिनट रहते हैं. I will share another link, no problem, but let's look at this video and then we'll proceed. अभी आप देख रहे हैं कि लेंथ बढ़ रही है यहाँ पे लैम्डा में, और लेंथ के बढ़ने से वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रही है, उसकी वजह से रेडिएशन पैटर्न भी चेंज हो रहा है. The more we increase, now we are at 1.9 lambda. The more we increase, the more we have different radiation pattern. So this is what the effect of the variation in length of a dipole antenna is. When it was λ/2, it was a donut shape, but now it is not a donut shape. तो इस तरह से जो है इसकी शेप बदलती है, and we can understand कि how it radiates and in which direction it actually radiates. Now we are very near to 5 lambda in fact, which is a very big, and you see in the beginning it was only λ/2 dipole. Now this is what जो हमने discuss किया था dipole antenna. This is one of the wire antenna, and you can construct it very simply. जो हमें नजर आ रहा है ये हम एक कंडक्टर लें और दूसरा कंडक्टर लें, and then we attach it with the coaxial cable, and then we need to have few turns in order to have a good matching of it. और इसको λ/4 हम दूर रखेंगे, λ/4 दूर रखेंगे for a good match and a good radiation pattern. So this makes a simple wire
antenna, that is a dipole antenna. Dipole इसको इसलिए कहते हैं, इसके दो poles हैं. So this one arm is lambda by 4 and another arm is lambda by 4. As per the frequency हम lambda की value calculate कर सकते हैं. For certain application it is 20 inches and 20 inches. Obviously ये दोनों same होंगे. Now जिस तरह हमने बात की थी ना, ये वही coaxial cable है, उनसे दो तारें निकली हुई हैं, and then we have wires. So we can have a multi-band HF antenna. This is an example of a multi-band HF dipole antenna, जिसमें different lengths हैं. ये एक dipole बना रहा है, इसी तरह ये वाला एक dipole है, ये भी है. This one is also a dipole. Depending on the जितना उसकी लेंथ होगी, उस हिसाब से उस फ्रीक्वेंसी के लिए वो रेजोनेट करेगा, वो उस फ्रीक्वेंसी के लिए काम करेगा वो एंटेना. So suggested lengths, total lengths of the wires are going to be for 80 meters, it is going to be 120 feet, which is the last one, this one. और इसी तरह for 40 meters it is 65 to 66 feet, the total length I mean, and 10 meters के लिए वो 17 feet रहता है. So these lengths can easily be calculated with the formula 468 by frequency given in divided by frequency in megahertz. अगर आप किसी कोई भी frequency के लिए antenna, dipole antenna design करना चाहते हैं, you can simply plug in the value of the frequency here and you can get the length of the wires you are going to make the antenna with. You can go through to this site, the slides will be shared. You can go to this site and you can further read about it. अच्छा जी, ये लूप एंटेनाज हैं. जब हम वायर को जो है ऐसे लूप की शक्ल में लेके आते हैं, then this is for matching. Obviously this is a connector is attached and the rest is, ये वही dipole antenna है लेकिन इसको circular shape में ले आए हैं. So this is the same dipole antenna, but because of making it circular, we can call this loop antenna, and obviously the radiation pattern and the gain and other characteristics of this changes as well. इस तरह का रेडिएशन पैटर्न ओमनी डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न कहलाता है. और इस तरह का रेडिएशन पैटर्न जो है ये 3D रेडिएशन पैटर्न है, जो कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर को यूज करके हमने बनाया है. और ये हमें एक डायरेक्शनल पैटर्न दिखा रहा है, जिसमें रेड कलर इज एक्चुअली शोइंग द मैक्सिमम रेडिएटेड फील्ड. लाइकवाइज ये CD की शक्ल में अगर सोचें हम इस रेडिएशन पैटर्न को, कि ये CD जिस तरह CD डिस्क होती है, उसमें साइडों पर तो वो गेन है अच्छा और रेडिएशन भी कर रहा है, बट above and below the dipole वो हमें रेडिएशन नहीं देता. So sometimes in certain applications we require dipole antenna, and in certain applications we require, as for example for satellite communication, हम obviously directional antenna पे जाएंगे कि जिसका radiation जो उसकी है वो directional हो. So the more it is directional, the more farther the signal can go and reach to a farther distance. YAGI-UDA array is also is an example of array antenna, और जिसका बनाना भी बड़ा easy है. We have a feed element which is again a dipole. ये जो हमें feed element नजर आ रहा है. अच्छा, इसके बाद ये जो ये कंडक्टर, ये सारे black color के जो bold lines हैं, they are conductors. So we need to make a directional antenna. Directional antenna बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए रिफ्लेक्टर पीछे लगाते हैं, जो कि डाइपोल के लेंथ से उसकी लेंथ ज्यादा होती है. अच्छा, इसकी अपनी कैलकुलेशन है, इसकी स्पेसिंग कितनी रखनी है और इसकी लेंथ कितनी रखनी है. लेंथ ऑब्वियसली कॉन्सेप्चुअली शुड बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द डाइपोल एंटेना, which is the driven element or you can say feed element. और उसके बाद जितने भी कंडक्टर्स होंगे, जितने वो ज्यादा होंगे, उतना ज्यादा डायरेक्शनैलिटी को वो बढ़ाएगा. The more elements you have, the more you have gain, the more directional the antenna is going to be, because they are defining the directionality
और ये पैरासिटिक एलिमेंट्स हैं, दे आर नॉट बीन फेड, सिर्फ और सिर्फ फीडिंग लाइन जो है ना, फीडिंग एलिमेंट जो है वो डाइपोल एलिमेंट ही है। डॉक्टर साहब आपके 2 मिनट रह गए, क्या करें, आप एक और जनरेट करेंगे ताकि कंटिन्यूशन में चल पड़े? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा रहता है, सो हाँ लेट मी फिनिश दीज 2 minutes and then I will share. ठीक है, सही है, ठीक है जी, ओके। Okay, this is a radiation pattern you can see. एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज जीशान साहब। अच्छा सर, मैं पूछना ये चाह रहा था, आपने अभी यागी का बता रहे थे कि जितने उसमें डायरेक्शनल एलिमेंट उसमें ज्यादा होंगे उतनी डायरेक्शन आप उसकी रेंज आपकी एक्सटेंड हो जाएगी ना? जी लेकिन अगर हमारे पास जिस तरह लाहौर में रिपीटर लगा हुआ है, इन बिटवीन और सिटीज में भी लगे हुए हैं, तो फिर आपको यागी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेंथ उसकी बढ़ाने की जरूरत है या नहीं? हाँ, एक खास ऑब्वियसली लिमिट है, एक लिमिट तक आप गेन को बढ़ा सकते हैं एंड देन आफ्टर दैट यू कैन नॉट इंक्रीज, बट इट अगेन डिपेंड्स कि आप फ्रीक्वेंसी क्या यूज कर रहे हैं, और अगर वो नहीं वो, सॉरी वो मैं बीच में काटूं जी, अगर आप लाहौर के अंदर रह रहे हैं देन यू डोंट नीड अ यागी। अगर आपने लाहौर से कलर कार को डायरेक्ट हिट करना है, या आपने मरी को मेरी आवाज किसी को आ रही है जी? जी जी सर, बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर साहब गायब हो गए। जी आ रही है।